Okay, so now coming to the subject, as you all know, the name of the subject is measurement science and technology. So this subject is actually all about measurements. Okay, what are the various types of measurements that we make? Why do we have to make measurements? What is the importance of taking measurements? Okay, then what are the different kinds of sensors that we can use while taking measurements? See, today it is a smart world. Okay, when we say smart world, meaning to say lot of things, rather I should say most of the things of our surrounding that you see, the engineering world that you see around you has become automated. You have home automations, you have automatic cars, you have automatic appliances, washing machines, microwave ovens, and so on and so forth. So wherever we are talking about automation, that means there is something in the device or in the system that is capable of taking a decision. When I say automated, automated means when there is no person present in the room, light gets off. When the person enters the room, light gets on. This is what automatic. We say it is automatic home automation, right? तो ये basically क्या हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई एक ऐसा डिवाइस आपने लगाया हुआ है जो ये डिसीजन लेता है कि अब मुझे लाइट को ऑन कर देना चाहिए, अब मुझे लाइट को ऑफ कर देना चाहिए. दैट बेसिकली रिजल्ट्स इनटू एन ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस, राइट? कार अगर ऑटोमेटिकली चलती है तो देयर इज सम मैकेनिज्म व्हिच एक्चुअली टेक्स दैट डिसीजन कि अभी मुझे ब्रेक लगाना है, अब मुझे एक्सेलरेट करना है, अभी मुझे गियर चेंज करना है, राइट? सो there is some mechanism which is actually taking some decision. Now on what basis this decision is going to be taken? Okay, even your brain is a decision maker. On what mechanism does it take those decisions? That is actually measurement. Okay, if you have to switch on the light or switch off the light, you can have an automatic system, you can have a relay, you can have an automatic switch for that, but there has to be some way to find out that is there a person present or not. Okay, there is always to be found out, is there an obstacle in front of the car or not? Is the car traveling on uphill, or is it going downhill, or is it going on the plain surface? What is the present speed of the car? Do we need to reduce it? Do we need to increase it? So all these things are actually based on measurement. There always has to be some device which has to continuously keep measuring the actual output that we are getting, and you have to keep comparing it with the reference output. यानी कि जो output system का है और जो output हमें चाहिए उसको हम continuously compare करते रहते हैं, और उसके basis पर जो decision होता है, that is actually basically जिसे हम automation of system कहते हैं. तो backbone of this automation is actually measurement. अगर आपका measurement accurate नहीं होगा तो सिस्टम का ऑटोमेशन, सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगी. इफ योर सेंसर गोज आउट ऑफ ऑर्डर, complete system goes into breakdown because there is no mechanism to find out what output you are getting, and the output that you are getting from the system, is it worth it or not. Okay, and because these days your complete engineering domain has become interdisciplinary, we are no more into explicit working of this is electrical, this is instrumentation, this is computer science. We are all into an interdisciplinary world now, so it becomes very important that certain basic things of engineering all the students should be knowing. Okay, so keeping that in mind, this subject has been introduced to the computer science students. In this particular subject, you are going to study about a lot of sensors, how they work, and on what particular quantity they work, what physical quantity they work on. Then you are going to learn about the signal conditioning systems. Signal conditioning system means what circuitry has to be designed for making the data that is coming from the sensor into a usable form. Mostly, आपका जो sensor होता है, it gives you a very, very feeble output.
उसको अगर आप ऐसे जज करने की कोशिश करोगे, मे बी फ्रॉम अ नेकेड आई यू विल नेवर कम टू नो दैट योर सेंसर इज एक्चुअली गिविंग यू सम आउटपुट. मोस्ट ऑफ द केसेस में द आउटपुट ऑफ द सेंसर इज वेरी फीबल. So that voltage or that current or that some displacement, movement, whatever output your sensor is producing, you actually need to amplify it to actually make that signal in a useful form. That requires certain circuitry which is called signal conditioning. और signal conditioning में हम दो important चीजें पढ़ेंगे, एक है filter और दूसरा है operational amplifier. Operational amplifier एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, these days they come in the form of an IC. It is that electronic component जिससे आप practically voltage के साथ कुछ भी play कर सकते हो. You can add voltages, you can subtract voltages, okay, you can have act like a differentiator, integrator, anything, any kind of action you can actually perform on the voltage or the current circuit with the help of an operational amplifier. And filter, of course, you understand by the name itself that when you are getting an input signal, उसमें बहुत सारी frequencies हैं. अभी frequency comes into a picture because we are in a wireless domain these days. ठीक है, आप लोग भी काफी सारे अपने applications पर जब काम करते होंगे. So today we are in a wireless control domain. Most of your applications आप देखते हो, they are all wirelessly controlled. रिमोट से हो या ऐप के थ्रू हो, बहुत कुछ है जो एक्चुअली वायरलेसली चलता है आजकल. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ वायरलेस डोमेन, मोस्टली द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एंड दैट इज एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यू एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ वायरलेस कंट्रोल. ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी भी पिक्चर में आती है. अगर फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आती है तो फिल्टर करना जरूरी है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स टेंड टू गेट नॉइज इनटू इट, they tend to pick up unwanted signals from the environment, and that can actually hamper the performance of your automated system. तो वहां पर हमें हमेशा जब भी हम ग्राउंड से सिग्नल उठाते हैं, फील्ड से कोई सिग्नल उठाते हैं, वो सिग्नल यूजुअली इट इज अ वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड सिग्नल. डिस्टर्ब सिग्नल का मतलब वो पैरामीट्रिक डिस्टर्बेंसेस को भी पिक कर लेगा आपका जो सेंसर है. सो वी ऑलवेज टेंड टू हैव अ फिल्टर डिजाइन which will filter out the particular component of interest and then proceed further in the circuit. तो हम different types of filters पढ़ेंगे, high pass, low pass, band pass. Okay, then we are going to talk about a section that is called Internet of Things. Internet of Things का मतलब हुआ कि इंटरनेट की हेल्प से अगर हमें हमारे सेंसर्स को ऑपरेट करवाना है, okay, we have to make a wholesome system, maybe a bunch of sensors working in different areas. कहीं कहीं फील्ड में आपने लगा रखा है और उन सबको आपको आपस में कनेक्ट करके यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, मे बी समवेयर इन अ क्लाउड और समथिंग लाइक दैट. दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ओके, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है it is very popularly coming into picture with the advent of home automation and things like that. Okay, so that is one section. So like and then last section में हमारे पास कुछ core domain के topics हैं, like PLC, that is called programmable logic control, and SCADA system. These actually relate to the core industry. When I say core industry, usually the manufacturing industry, okay, other than IT. Normally the other components than IT, we call them core industry, like your petroleum plants, your manufacturing plants, okay, your refineries, okay, where you have big boilers and big equipment. And mostly these plants are somewhere in the field where it is not very very safe for a lot of human resource to be present over there. And mostly we tend to control these kind of plants with some distant office. हम कहीं नोएडा में बैठे हैं एयर कंडीशनड ऑफिस में, and we are able to monitor all the surrounding plants of maybe the IOCL or maybe Gas Authority of India Limited. So you might be having suppose 5 plants in the near vicinity somewhere in the field outside the city, but you have a comfortable office in Noida, and from there you can actually control all. तो ये सब कुछ कैसे possible होता है,
ये PLC और SCADA के help से possible होता है. And to implement this kind of systems, actually the knowledge of instrumentation along with at least some basic knowledge of computer networks, data structures is very, very important. Sum total में ये दोनों चीजें जब you apply them in combination, then this network control actually results, which we usually also call SCADA. Okay, so in general इस तरह की जो भी industries होती हैं, along with the team of instrumentation engineers, you usually have a network engineer also. Okay, so ऐसा नहीं है that if you are computer science students, you are going to have options only in the computer science domain. You are equally important for the other core domains also, because these days we are converting everything into automation. We are making everything automated. We are wirelessly transferring the data. When data comes, obviously your DBMS that you study, database management system, that comes into picture. Very, very important. You have a large data, how to retrieve the information from that, how to analyze the data. Okay, any instrumentation engineer would be able to solve the instrumentation problem only if you have a proper database system from where you can retrieve the data. जो भी मान लीजिए पिछले 1 महीने में जो डेटा लॉग हुआ है, परफॉर्मेंस डेटा लॉग हुआ है, उसको एनालाइज हम तभी कर पाएंगे जब वो सिस्टम में प्रॉपर्ली स्टोर होगा, उसका रिट्रीवल मेथड जो है वो एफिशिएंट होगा. सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स, यू नीड टू हैव डेटा स्ट्रक्चर्स, you need to have database management systems. All these domains are equally important in the present scenario, even in the non-IT or the non-computer science industries. Okay, so keeping all these things in mind, this subject has been introduced to you guys, and we are going to talk a lot about sensors in this particular subject. Okay, so in the first particular topic, introduction to measurement. Measurement is a process of detecting an unknown physical quantity by using some standard quantity. Now, there is a difference between two terms. One is called sensing and one is called measuring. When we say sensor, okay, sense करने का मतलब होता है just to detect that there is some change. Okay, air pressure change हुआ, आपने जो sensor लगाया है उसने कहीं ना कहीं ये मेजर कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, एक्चुअली मेजर इज द रॉन्ग वर्ड, उसने ये डिटेक्ट कर लिया दैट देयर इज अ चेंज इन प्रेशर. ओके, बट हाउ मच चेंज इज टेकिंग प्लेस व्हेन आई से देयर इज अ चेंज इन प्रेशर, और व्हेन आई यूज द टर्म्स लाइक प्रेशर हैज इंक्रीज्ड और प्रेशर हैज डिक्रीज्ड, these are actually qualitative terms. They give you a rough idea of what is happening, but they do not give you a precise idea of exactly how much is happening. Okay, for that, to make this event of some change taking place in any physical quantity, to make this quantifiable. When I say quantifiable, means to have some specific value about that change, we have a process that is called measurement. So the measurement is actually the process of detecting the unknown physical quantity by measuring, by comparing it with some standard quantity. Abhi distance hai, some displacement is taking place. How do you find out how much displacement has taken place? Maybe with the help of a ruler, you actually measure how much distance it has traveled. So your ruler or the scale that you are using is actually a standard quantity. And the physical quantity that has changed, maybe your object has moved in the circular manner, maybe, or maybe in a linear motion, that is the physical quantity. So physical quantity becomes displacement and the standard becomes your ruler. So by comparing the change taking place in the physical quantity to some standard, the process of finding out how much change has been taken place, that is actually called the measurement. Now, a way of giving an activity a precise dimension, generally by comparison to some standard, usually done in a quantifiable or numerical manner. So this is just another definition of measurement. Okay. Why do we need measurement? What are the various applications because of which we need measurement? Now, monitoring of processes and operations, seeing this picture,
all of us in the present day, we all get alarmed. This particular thermometer, it has become an alarming source for all of us in this COVID times. So that is one of the best examples of monitoring a process. We are monitoring the spread of a disease. We are monitoring the spread of, in the pandemic situation by actually measuring the temperatures. Okay, so this is one of the applications. Any process or any operation that is taking place, if you have to monitor. Now, this again becomes a very, very, very crucial point when you talk of industries, specifically core industries. That whenever, because in the core industry, when I say there is a huge process going on, there might be a big boiler. Okay, there are big pipes, chemicals might be flowing, steam might be there, hot water, hot oil might be flowing. Okay, so when such a complex and a high level system is operating, safety is a very, very important issue. Output, of course, is important, but along with that, a very important point is safety. And safety comes from various aspects. Temperature एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Temperature अगर ज्यादा होगा, air might expand, pressure might increase, your valves might go out of order, your pipes might burst out, and things like that. So monitoring of the process as well as operation, or you can say, monitoring whether the output that you are getting will be correct or not. For that, you need the monitoring of various parameters. Then also for the safety reasons, to find out whether the operation that is going on is within the safety limits or not. Again, monitoring that requires measurement of various parameters related to that particular system. So one of the important application is monitoring of the process and operations. Then control of the process and operation, like I told you, that when we are talking of automation, then if you have to control the output, if you have to control the process, then obviously measurement is required. Now on your screen, you can see an example of a closed loop control system. Now this is actually you can say a block diagram which represents any type of automation. Okay, reference input you have. Input means what actually you desire to perform. Okay, and there is a plant. Plant is continuously giving you some output. Now this plant can be anything. Plant can be a home automation system, a room where you have to check whether the light has to be on or off, or it can be a boiler plant or something like that. It is continuously giving you some output. This output is continuously being measured with the help of sensors and being fed back with the help of feedback elements. Compare to the reference. यानी कि प्रेजेंट आउटपुट क्या आ रहा है, उसको सेंसर्स की हेल्प से हम फीडबैक एलिमेंट से फीड करते हैं टू अ कंपैरेटर. दिस सर्कल दैट यू सी इज अ कंपैरेटर. और इस कंपैरेटर में हम जो हमारा रेफरेंस है, यानी कि जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, उसके साथ कॉन्टिन्यूअसली कंपेयर करते रहते हैं. ठीक है, अगर तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, हमारा एरर सिग्नल 0 हो जाएगा. कंट्रोलर विल नॉट मेक एनी चेंज इन द सिग्नल. ओके, बट अगर यहाँ पर कुछ एरर आएगा, यानी कि अभी भी आपका आउटपुट एक्चुअली डिजायर्ड आउटपुट को मैच नहीं करता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या एक्शन लेना है वो कंट्रोलर डिसाइड करेगा. सपोज फॉर एग्जांपल, यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड फिगर, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आपका एक इनलेट वॉल्व है, एक आउटलेट वॉल्व है. यू वांट टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लेवल इन दिस पर्टिकुलर टैंक. आपने एक लेवल सेंसर लगाया. लेवल सेंसर कंटिन्यूअसली, नाउ दिस ट्रांसमीटर बिकम्स योर फीडबैक एलिमेंट. कंटिन्यूअसली लेवल सेंसर इज टेकिंग अ वैल्यू फ्रॉम द आउटपुट. एक्चुअल हाइट कितनी है वो सिस्टम का आउटपुट है. ठीक है, लेवल सेंसर कंटिन्यूअसली इस हाइट को मेजर करके with the help of a transmitter it is feeding to the controller. Okay, when I over here controller के अंदर ही actually comparator लगा होता है. And we have a set point. Set point का मतलब कितना हाइट हमें चाहिए था वो हमने फीड कर दिया कंट्रोलर में, और एट प्रेजेंट कितनी हाइट है वो सेंसर कंटिन्यूअसली मेजर करके कंट्रोलर को बताएगा. यहाँ पर उन दोनों का कंपैरिजन करके, यानी कि दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके, कंट्रोलर विल डिसाइड whether this inlet liquid has to remain open or whether it has to remain closed. अगर जैसे जैसे ये हाइट
आपके रिक्वायर्ड उसके पॉइंट के करीब आती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा कंट्रोलर इस इनलेट वाल्व को क्लोज करता जाएगा। एंड फाइनली जैसे ही ये हाइट इक्वल हो जाती है टू द रेफरेंस set point and reference become equal, controller gives a signal to the inlet valve to close it completely. That means there is no input coming in. So like this is one of the examples of controlling any process. So again, unless there is a sensor over here, this whole process actually cannot work, right? So monitoring of the process is one application, then controlling the process is another application. Then experimental engineering analysis, that is to test the validity of theoretical calculations to determine system parameters, variables, and performance indices. So various types of engineering analysis that we want to do theoretically, whatever theories have been designed mathematically, lot of theorems that you keep studying, when we have to verify them practically, you need certain data, you need certain experimental data to actually analyze whether the theoretical results actually match with the practical results or not. So again, for that, you need to have sensors, you need to have a system for measurement to collect that data and then analyze it to compare with the theoretical results. Okay. Now, instrument classification, how we classify the instrument into various types. One type is active and passive instruments. Then we have null type and deflection type instruments, analog and digital instruments, and then absolute and secondary instruments. What does passive and active actually mean? Passive instrument का मतलब होता है this instrument doesn't have any source of power from outside. For example, you can see a pressure gauge in the figure. नीचे liquid है, over that there is a piston. The piston is attached to the other end of the this whole sealed cavity with the help of the spring. And this piston is also attached to a scale with the help of a pointer. जैसे जैसे liquid का pressure change होगा, this piston is going to move up and down because of the spring. It has a freedom to move. Okay, it is going to move up and down, and correspondingly the pointer is going to deflect on this particular scale, and it will show you how much change in the pressure has taken place. So this is passive instrument. There is some change at the input, and correspondingly there is some indication at the output without having any external power source. Okay, अब इसमें अगर आप देखो प्रेशर के चेंज से एक फिजिकल चेंज यानी कि फिजिकल मूवमेंट जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है इस सिस्टम में, पहले से कोई फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, इस केस में ये सर्कुलर लीनियरली, ये जब पिस्टन डिस्प्लेस होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉइंटर जो है वो सर्कुलरली डिस्प्लेस होगा, तो पहले से इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है। ओके, जब प्रेशर में चेंज होता है, जब लिक्विड के प्रेशर में चेंज होगा तो एक फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिल रहा है दैट इज प्योरली बीइंग ओरिजिनेटेड ड्यू टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द इनपुट साइड। इनपुट हमारा इसमें जो है वो प्रेशर है, यानी कि लिक्विड का प्रेशर, इसमें जो भी चेंज होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली स्केल में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अगर इसमें कोई चेंज नहीं है सो फिजिकल मूवमेंट इज आल्सो जीरो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो इस तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ पैसिव इंस्ट्रूमेंट। Okay, the instrument in which the output is produced entirely by the quantity being measured are called passive instruments. So output इस केस में क्या है? Deflection on the scale. This is entirely being produced only by the pressure change in this particular liquid. Okay, there is no other power source. There is no deflection or movement present from beforehand. It is entirely being generated by the change taking place in this particular liquid. Okay, then on the other hand there can be an active instrument. Active instrument के केस में क्या होता है? There is already firstly there is an external power source. अब same चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं? That we have certain liquid over here. हमने एक float डाल रखा है. Now again float is a type of pressure sensor. Pivot scale है और स्केल को हमने एक रियोस्टेट या एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया है। इन दिस पर्टिकुलर सर्किट यू कैन सी देयर इज अ रेजिस्टेंस, ओके, देयर इज सम एक्सटर्नल पावर सोर्स। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी एक करंट फ्लो कर रहा है। जब ये रेजिस्टेंस जो है
like a variable resistance, like a rheostat, or you can say like a potentiometer, जब ये float की position change होगी तो आपका scale pointer जो है अलग अलग point पर जाके rest करेगा depending upon the pressure in the liquid. Okay, उसके हिसाब से क्या होगा, the active resistance in the circuit will change. Okay, अगर मैं यहां से output measure कर रही हूँ, so only this much part you can see, only half of the resistance is actually coming into picture, not the complete resistance. Okay, so if the resistance is reduced, obviously the voltage that you were measuring earlier is going to change. V is equal to IR के हिसाब से हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाई थी, इस पर्टिकुलर सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है, एक वोल्टेज इसके अंदर डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस R. हमने क्या किया, अपने मेजरिंग पॉइंटर को इस रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर लिया है इलेक्ट्रॉनिकली, एंड उसके बीच में से हम कहीं से आउटपुट को टैप कर रहे हैं. तो जैसे ये फ्लोट ऊपर नीचे मूव करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा जो पॉइंटर है वो इस रेजिस्टेंस पर स्लाइड करेगा, तो सिस्टम की जो एक्टिव रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी. ओके, वो जब चेंज हो जाएगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो आपको मेजर करने के लिए मिलेगा आउटपुट पे, that is going to vary. Now this is an active instrument. इस केस में there was voltage present in the system by default because of the battery. हमारा इनपुट जब चेंज हो रहा है तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोल्टेज को हम सिर्फ वेरी कर रहे हैं, हम वोल्टेज प्रेशर चेंज की वजह से वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. There is already some voltage present there. Because of the change in the level, we are changing the level of voltage. We are not producing a voltage. Okay, whenever we have an external power source, it becomes an active instrument, and the change in the input taking place is actually just varying this power source, okay, and giving us a variable output. So this kind of a system is actually called an active instrument. Okay, so we have a question from Samarjot. Please tell the types again. Okay. So we have various classifications of instruments. Passive and active, abhi jaise maine aapko explain kiya, on the basis of whether we are using some external power source or not, we have active and passive instruments. Then we have null type and deflection type. We have analog and digital type instruments, and then we have absolute and secondary type instrument. One by one, I'm going to explain all these to you. Passive and active, I have already told you. Okay. Then we have null type and deflection type. Null type and deflection type का मतलब होता है, for example, if you see this particular figure, null type का मतलब ये हुआ कि जब हमें सिग्नल को मेजर करना होता है, we move the signal, we move the instrument in such a way that the detecting meter that you have used should actually show a null deflection. Null deflection का मतलब ये zero show करना चाहिए. For example, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज फिजिक्स में पढ़ा होगा in your +2 level. उसमें अगर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, हमें मेजर करना है कि कितनी रेजिस्टेंस एक्चुअली में है, अगर अननोन रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है, सो वी यूज द फंडामेंटल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन. तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को मूव करते हैं कि हमारा बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है, इट शोज जीरो डिटेक्शन. उसके बाद हम R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 लगा के जो भी मिसिंग रेजिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी मेजरमेंट को करने के लिए, अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कुछ ऐसा चेंज करते हैं सिस्टम में, such that the meter that you have attached along with that should show you a null deflection. That means a zero deflection. और उसको जीरो डिफ्लेक्शन पर सेट करने के बाद हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन टाइप होता है, जैसे अभी हमने प्रेशर वाला एग्जांपल देखा, इसमें क्या है, कितना चेंज इनपुट में हुआ है वो डिफ्लेक्शन से ही पता चलेगा हम. ओके, इसमें जीरो का मतलब होता है जीरो चेंज, जबकि null type में zero deflection doesn't actually mean zero change. We just make the system in such a way,
कि वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उस जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन पे जाके हम फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे कि अननोन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या है। ये और क्लियर होगा जब हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे। सो व्हीटस्टोन ब्रिज में नल टाइप एंड डिफ्लेक्शन टाइप बोथ आर देयर, that we are going to study I think in your second or third unit. Then this particular concept will be even more clear to you. Okay, और डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितना चेंज इनपुट पे हुआ उतना कॉरेस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन होगा, जो नॉर्मली आजकल आप अपने एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, अगर एनालॉग टाइप आपने देखे हो लैब में, तो उसमें होता है कि जितनी वोल्टेज होती है वो डिफ्लेक्ट करके उतना स्केल पे शो कर देता है। दैट इज डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट. Then analog and digital, this of course you understand. Analog is where measurement can be done continuously at any moment of time and any value can be obtained. Whereas in digital, you actually have, certain sampling is done. Digital में क्या है, उसका कुछ अपना एक लीस्ट काउंट होगा, उतना स्मॉल क्वांटिटी ही आप मेजर कर सकते हो, उससे स्मॉल यू कैन नॉट गो. डिजिटल में जैसे डिजिटल वॉच होती है अगर आपकी, सो इट शोज यू सर्टेन नंबर्स इन डिस्क्रीट नंबर्स, तो उसका जो भी एक यूनिट वैल्यू होगा, इफ सपोज इट इज 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से नीचे आप मेजर नहीं कर सकते. Whereas analog, when we say it is continuous, इसका मतलब वो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में भी कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है which you can actually measure. So simply saying, analog is where you can have a continuous measurement at any point of time and at any value. Whereas in digital, we say we quantify this. Okay. We have certain sampling methods जिससे जब हम digitize कर देते हैं तो इसका कुछ एक सैम्पलिंग सेट पॉइंट होता है, एक लीस्ट काउंट होता है. ओनली विद दैट ड्यूरेशन यू कैन एक्चुअली हैव सम मेजरमेंट्स टेकिंग प्लेस. Then you have absolute and secondary measurement. The instrument which gives the magnitude of the quantity to be measured in terms of some physical constants of the instrument is called absolute instrument. अब ये actually these days this is not very popular. ये थोड़ा सा ऑब्सलीट हो गया है ये वाला मेथड. उसकी जगह हमारे पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं. सेकेंडरी, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. द इंस्ट्रूमेंट इन विच द रीडिंग शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट गिव्स डायरेक्टली द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. अब ये सिंपल है. एमीटर और वोल्ट मीटर जो आजकल आप देखते हो, उसमें बेसिकली जब आप इनपुट लगाते हो तो आउटपुट पे डायरेक्टली आपको वोल्टेज या करंट की रीडिंग मिल जाती है. This is actually secondary instrument. Absolute instrument का मतलब क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली करंट या वोल्टेज नहीं दिखाएगा, वो आपको कोई कांस्टेंट दिखाएगा या कोई और वैल्यू दिखाएगा जिससे आपको फाइनली वोल्टेज या करंट कैलकुलेट एक्चुअली में करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक पहले एक डिवाइस हुआ करता था विच यूज्ड टू बी कॉल्ड टैंजेंट गैल्वेनोमीटर. टैंजेंट गैल्वेनोमीटर में एक्चुअली क्या होता था कि जब करंट फ्लो करता है, सो यू ऑल नो दैट अलोंग विद द करंट फ्लोइंग देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, फिजिक्स में आपने लॉज पढ़ रखे हैं दैट व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर देन देयर इज आल्सो सम मैग्नेटिक फील्ड अटैच्ड टू इट. तो हम क्या करते थे, हम एक नीडल रख देते थे उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके डिफ्लेक्शन से हम पहले मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते थे. दैट इज सम कांस्टेंट, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग फिजिकल कांस्टेंट, कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई है वो एक्चुअली में मेजर होती थी. और फिर यूजिंग सर्टेन कैलकुलेशंस वी यूज्ड टू कैलकुलेट कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में या इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है. दैट इज कॉल्ड टैंजेंट गैल्वेनोमीटर. ठीक है, आई विल शो यू द फिगर. दिस इज व्हाट इट यूज्ड टू लुक लाइक. ओके, अभी आजकल आपके पास एमीटर्स और वोल्टमीटर्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली जैसे ही सर्किट में लगाते हो तो यू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ओके, बट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस जिसमें डायरेक्टली वोल्टेज या करंट नहीं मिलता था. करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है विच इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट, वो मेजर होता था और उससे हम कैलकुलेट करके करंट निकालते थे. ओके, सो दैट इज योर एब्सोल्यूट एंड secondary measurement. Then you can have direct or indirect measurement also. Direct and indirect, this is basically for the instrument, absolute and secondary. And type of measurement में हम direct और indirect बोल सकते हैं. Direct, this is very simple to explain. Direct means something which has a standard quantity known to us. जैसे displacement, आपने scale रखा और directly measure कर लिया that how much
डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डायरेक्ट मेजरमेंट्स, लाइक कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायरेक्टली हमारे पास कोई भी सेंसर नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, और उसके फॉर्मूला से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। सो मेजरिंग ऑफ लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। मेजरिंग ऑफ स्पीड, or rather I should say calculation of speed, is an example of indirect measurement. Okay, so that was about the basics. I can see some question probably coming. Okay, which book we are supposed to follow this for this subject? There is a book on electrical and electronic measurement by A.K. Sahni. Okay, that you can follow. You will find everything about measurement in that particular book. It's like the Bible of instrumentation. But take care that there are two A.K. Sahnis available. One is mechanical measurements, not that one. One book by A.K. Sahni, which is electrical and electronic measurement. In that you will find most of the things related to your sensors and op-amps and filters, everything. Other than that, if something special will be required, that I will tell you in due course of time as we proceed. Okay, so